Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Today we will discuss entitled theme Human Development with special reference to emotional development. As we have already completed subtopics of human development, especially physical development and cognitive development. Now in today's lecture, we will purely focus on emotional development. Before we will discuss emotional development and how it takes place in the human beings, now let me to focus on what is emotion. Dear students, as we know that emotions are reactions that human beings experience in response to events or situations. The type of emotion a person experiences is determined by the circumstances that triggers the emotion. For instance, a person experiences joy when they receive good news and fear when they threatened. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, emotions are basically the human reactions. And human beings trigger the emotions. It depends upon the circumstances or situations. किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो रिएक्ट करता है सिचुएशन को and accordingly express the emotions. Expression of emotions is based on the type of circumstances or situations. Dear students, mostly human beings express emotions either in positive manner or in negative manner. Dear students, human beings basically experience and express various types of emotions. For instance, joy as an emotion is expressed by the human beings. Happiness और joy जो emotion है, वो तब एक individual express करता है जब वो कोई good news सुनता है. For example, एक बच्चा जो है learner who cracked a particular type of exam, किसी बच्चे ने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया तो ये गुड न्यूज़ उसने सुनी, तो उस वक्त भी वो इमोशन उसको एक्सप्रेस करता है, especially the positive emotion in the form of joy and happiness. या किसी इंडिविजुअल की कामयाबी किसी और फील्ड में हो जाती है तो उस वक्त भी वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, especially joy, happiness. Apart from it, we can quote number of examples. जब एक इंडिविजुअल को जॉब मिल जाता है या किसी कंपनी से ऑफर आ जाता है तो उस वक्त वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. जब भी एक इंडिविजुअल गुड न्यूज़ सुनता है तब उस वक्त वो जॉय और हैप्पीनेस एज ए इमोशन एक्सप्रेस करता है. And on the other hand, so far as humans are concerned, humans possesses both types of emotions. जहां पर एक इमोशन in the form of joy है as a positive emotion, वहीं पर एक ह्यूमन बीइंग में सैडनेस, एंगर एज ए नेगेटिव इमोशन है या फियर एज ए इमोशन है. एक इंडिविजुअल न्यूज़ सुनता है फेलियर का, कोई बच्चा पर्टिकुलर क्लास में फेल हो गया है तो उस वक्त वो फियर महसूस करता है, उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है. यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज बेस्ड ऑन द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस. अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशंस को करता है,
अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा या पैनिक एक्सपीरियंसेस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है तो उस वक्त वो एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशंस को करता है इन द फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, in the form of sadness, in the form of gloominess, because there are diverse emotions. जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एक ह्यूमन बीइंग की बनावट है, the makeup of individual is made up of various aspects or parts, like physical aspect, intellectual aspect. Apart from these two aspects, human beings also possesses emotional aspect as well. Or expression of emotions is based upon situations or circumstances. Now, in broader perspective, we will describe what are emotions. Dear students, the term emotion is derived from Latin word emovere, which means to strive, to agitate, to move. Hence, an emotion is referred to as stirred up state of the organism. We feel agitated or excited when we experience anger, fear, grief, disgust, joy, etc. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, emotion simply means reaction of human beings. Moreover, we can beautifully define. Basically, emotions are derived from Latin word emovere, which means excitement. और कब एक इंडिविजुअल एक्साइटेड होता है? एक इंडिविजुअल जो है वो एक्साइटेड फील करता है इन बोथ सिचुएशंस, वेदर विल एक्सप्रेस द इमोशंस लाइक जॉय, हैप्पीनेस, फियर, एंजाइटी, gloominess, sadness, so on and so forth. These are the various emotions which are expressed by the human child or human beings. Dear students, flow chart पे दिया गया है wheel of emotions. You should also carefully focus onto the wheel so that you will come to know about various emotions, both positive emotions and negative emotions. और कंप्लीट साइकिल इमोशंस का दिया गया है, जैसे कि सरप्राइज्ड, बैड, फियरफुल, एंग्री, डिसगस्टेड, सैड, हैप्पी, एंशियस, इनसिक्योर, वीक, रिजेक्टेड, थ्रेटनड, लेट डाउन, ह्यूमिलेटेड, बिटर, मैड, एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड, क्रिटिकल, disapproving, disappointment, proud, accepted, powerful, peaceful, trusting, optimistic, so on and so forth. Various types of emotions are mentioned in the wheel. Dear students, और इन इमोशंस के रिलेटेड ऑलवेज बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो यू शुड नॉट एनीवे स्किप द चार्ट, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी इमोशन नेगेटिव है और कौन सी इमोशन पॉजिटिव है. नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन हाउ इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द इंडिविजुअल्स. ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है. एज डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इमोशनल डेवलपमेंट refers to the ability to recognize, express and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of others. जैसे कि हम सब जानते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें एक इंडिविजुअल न सिर्फ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बल्कि वो बखूबी जानता है किस तरीके से इमोशंस को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को समझा जाता है और दूसरों की फीलिंग्स को समझा जाता है. Dear students, you should not get confused. Difference between the feelings and emotions. Feelings are the base of emotions, while as emotion simply means, or emotions simply means
agitated state of the mind. जब फीलिंग्स हाइटेंड स्टेट लेती है, पीक पे चली जाती है, तो वो उस वक्त फीलिंग्स नहीं रहती है बल्कि डायरेक्टली कन्वर्ट इमोशन में होती है। जिस तरीके से एक पर्सन जो है वो फील करता है टू क्वेंच द थर्स्ट, जब एक इंडिविजुअल को प्यास लग जाती है, प्यास बुझाना उसकी एक नीड है। द पर्सन नीडेड द वाटर। अगर इसी प्यास को हमने 10-15 दिन एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को नहीं बुझाया, तब वो नीड नहीं रहती है। द नीड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द ड्राइव। जिस तरीके से हम सब ने ऑलरेडी समझा है थर्स्टी क्रो, किस तरीके से वाटर जो है, आई मीन टू से यू थर्स्ट ऑफ वाटर एज ए नीड कन्वर्ट हो गई ड्राइव में, और फिर किस तरीके से एक क्रो ने अपने ड्राइव को रिड्यूस किया। सेम इज द केस विद द इमोशंस। इमोशंस बेसिकली पहले इमोशंस नहीं होती है, दीज आर फीलिंग्स। जब यही फीलिंग्स आउटबर्स्ट हो जाती है तो इमोशंस कहलाती है। दैट इज व्हाई आई मेंशन इट हियर, फीलिंग्स आर द बेस ऑफ इमोशंस। और एक इंडिविजुअल की जो इमोशंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाती है फ्रॉम बर्थ टिल टू द ओल्ड एज, क्योंकि देयर आर डिफरेंट पीरियड्स, नंबर ऑफ टाइम्स वी डिस्कस इट, किस तरीके से एक ह्यूमन चाइल्ड जो है वो डिफरेंट पीरियड से पास होता है, और हर एक पीरियड में इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। चाहे हम इन्फेंसी की बात करेंगे, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड स्टेज स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड स्टेज के बाद एडोलिसेंस स्टार्ट होता है, एडोलिसेंस के बाद एडल्टहुड स्टार्ट होता है, और एडल्टहुड के बाद लास्ट स्टेज जो होता है दैट्स नोन एज ओल्ड एज स्टेज। हर एक स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट? नटशल में हम कह सकते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी इमोशंस का एक्सप्रेस करता है, उन्हें मैनेज कर पाता है, या वो दूसरों के लिए भी इमोशंस रखता है और अपने आप के लिए भी वो इमोशनल बन जाता है। हाउ एन इंडिविजुअल मैनेजेस द इमोशंस and also develops the emotional bond or relationship with the others is known as emotional development. Dear students, emotional development is one of the major aspects of the human growth and development. Emotions like love, anger, fear, etc. play a great role in the development of the child's personality. Not only his physical growth and development is linked with his emotional makeup, but his intellectual, social, moral, and aesthetic development are also controlled by his emotional behavior and experience. As we know that our growth and development is not possible without the emotions. Dear students, personality development of an individual is based on the emotional development. Emotions does not only help us to promote the physical and cognitive development. Emotions से सिर्फ cognitive development और physical development ही gain नहीं हो जाती है, बल्कि emotions also play important role in terms of social, moral and aesthetic development of an individual. नटशल में हम कह सकते हैं the development of the personality is based upon also emotional development. That is why all aspects of the personality are interconnected and interlinked with one another. चाहे physical aspect है, intellectual aspect है, emotional aspect है, social aspect है, या spiritual aspect है। किस तरीके से emotions जो है, feelings जो है, ये एक मेजर रोल परफॉर्म करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब हैप्पीनेस, सिंपैथी, अफेक्शन दूसरों से हासिल करता है
तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन व्हेन द इंडिविजुअल विल गेट लव, रेस्पेक्ट, जॉय, एम्पैथी एंड सिंपैथी फ्रॉम द अदर्स। अगर इसी इंडिविजुअल को हम हेट देंगे, इसके साथ जिद और अहंकार करेंगे, ग्लूमीनेस वो फील करेगा, सैड वो फील करेगा, इट लीड्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन द साइकोलॉजिकल state where the individual has having the maximum chance that to become the victim of psychological disorder या personality disorder। जब negative emotions in the form of hate, jealousy, sadness, frustration एक ह्यूमन इंडिविजुअल पे हावी होती है, तो उसे चांसेस होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होने के। इसीलिए वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय द इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल। नटशल में हम कह सकते हैं इमोशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ फिजिकल बीइंग ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल बीइंग ही नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बीइंग एंड इंटेलेक्चुअल बीइंग the humans are emotional beings as well। हमें अपने इमोशंस को भी समझना चाहिए और दूसरों के भी इमोशंस को समझना चाहिए। Now before concluding the topic, there is another important slide जहां पर फ्लो डायग्राम्स दिखाई गई है, और इन फ्लो डायग्राम्स पे भी आपका फोकस होना चाहिए। किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। इन पिक्चर्स की बदौलत से आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस हम में है। बहुत सी पिक्चर्स दी गई है और केयरफुली इन पिक्चर्स की तरफ भी, या हम कह सकते हैं इमेजेस पे फोकस करना चाहिए, ताकि हर एक लर्नर को समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन्स आर मेकअप ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, और टाइमली विद द पैसेज ऑफ एन टाइम किस तरीके से एक इंडिविजुअल डिफरेंट इमोशंस एक्सप्रेस करता है, चाहे जॉय है, लव है, हेट है, एंगर है, वीप है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, लेट डाउन है, क्यूरियोसिटी है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, ग्लूमीनेस है। When you will focus on these flow diagrams, automatically you will come to know about different emotions and how these emotions influences or affects the human development. Dear students, in next lecture we will focus on another topic that is entitled as classification of emotions, especially पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन सी है और नेगेटिव इमोशंस कौन कौन सी है। हाउ पॉजिटिव इमोशन एंड नेगेटिव इमोशन डिफर ईच अदर। इस टॉपिक को हम आने वाले कल में डिस्कस करेंगे। इफ यू रियली enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.